Hi everyone, welcome back to today's session on Insightful Maths. In today's session, we'll be continuing the chapter Linear Equations in One Variable. Exercise 2.1 we have already finished in the previous session. Today we'll be continuing with some extra questions, the errors which students generally make which you should avoid, and along with exercise 2.2. So again, I request please watch the video till end and be ready with your book, notebook, and take the notes simultaneously. Okay, let's start. So before starting the main topic, how to transpose the fractional form of the variables, let's see how to avoid the common errors, which generally students do that. Transposing the fractions. For example, I have a fraction x plus 1 upon 2. For example, I have a fraction x plus 1 upon 2, which is equal to x minus 1 upon 6. For example, this is my question and I need to solve it for the value of x. Is it a linear equation? Yes, it is linear because the highest power of the variable x here is 1. 1 से ऊपर कहीं power नहीं है. It is a linear equation. अब वॉट वी कम टू योर माइंड कि इस पूरे फ्रैक्शन को उठाकर हम यहाँ ले आते हैं, दैट इज ट्रू ऑल्सो, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन. बट द एरर स्टूडेंट डू इज, आई विल जस्ट डू दैट फॉर यू. x plus 1 upon 2 which is there on the left hand side, what they do, then they write minus ये पूरा fraction x minus 1 upon 6 which is equal to 0. Please pay attention here. When you are taking the fraction to the left hand side, undoubtedly the complete fraction is becoming negative. तो आप क्या करोगे? It is advisable to put a bracket here and then solve. अगर हम bracket नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? जब आप ये bracket open करोगे, this will become minus x, और ये वाला अगर आपने bracket नहीं लगाया तो आप इसको open करोगे minus x minus 1 upon 6, which is incorrect. Because when you're taking it to the left hand side, minus of x is minus x and minus of minus 1 should become plus 1. So इतना सारा ये सब करने की जगह, it is better to first get, this reduced to a linear form, not in the fractional form. ऐसे में आप क्या करोगे? It is advisable to first cross multiply. क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब टेक दिस 6 टू द लेफ्ट हैंड साइड. अगर इस 6 देखो ऑन द राइट हैंड साइड इट इज डिवाइडिंग. इफ आई टेक दिस 6 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड it will be multiplying with the numerator. In the similar manner, 2 transpose to another side. ये नीचे वाला number it goes up. So 2 will be multiplied with x minus 1. Fraction हमारे पास नहीं रहेगा. Then easily we can transpose the terms. I'll just do that for you so that you understand what I'm saying. 6 gone to left hand side. Let me just clear it up. I request you also to do this simultaneously along with me. 6 gone to left hand side, that means 6 is multiplied with x plus 1, which is equal to 2 gone to right hand side, 2 is multiplied with x minus 1. Let us open the bracket now. 6 multiplied by x, 6x, plus 6 multiplied by 1 is 6. 2 multiplied by x is 2x, minus 2 multiplied by 1 is 2. Now, we have already done these kind of questions in the previous session. X wala term, the variables on another side, constant to another side. So, I will take this 2x to left hand side. On the right hand side, 2x is positive. So, on the left hand side, it will become negative. So, we are going to get 6x minus 2x is equal to minus 2, and plus 6 on the right hand side will become minus 6. I think till here it is okay. Now 6 minus 2, it is plus 4x, and minus 2 minus 6 is how much? Two negative numbers together to be added along with the minus sign. So now 4 and x is getting multiplied. अगर मैं 4 हटाऊंगी, x is equal to minus 8 upon 4 and your answer will be minus 2. Okay, so please try to get rid of the denominator by cross multiplying, and please ensure अगर आप fraction को पूरा left hand side ले रहे हो, put it inside the bracket. We'll be doing questions based on this topic.
सेकेंड वन, सब्ट्रैक्टिंग अ बाइनोमियल फ्रॉम अ मोनोमियल. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स मेक एन एरर. फॉर एग्जाम्पल, आई नीड टू सब्ट्रैक्ट x minus y. Is this x minus y a binomial? It is having two terms. It is a binomial. जब भी आपको बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और एनी पॉलिनोमियल हैज टू बी सब्ट्रैक्टेड, ये बेसिक चीज याद रखो. एंश्योर टू पुट अ ब्रैकेट है, अदरवाइज क्वेश्चन विल गो रॉन्ग. अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाऊंगी ना, सो क्वेश्चन विल लुक लाइक x माइनस वाई. ये मुझे ऐसा दिखेगा. x and x I will cancel and I'll end up getting minus y, which is an incorrect answer. Have a look here. मुझे ये बाइनोमियल सब्ट्रैक्ट करना है x में से. नाउ वी नो दैट इफ देयर इज अ माइनस साइन आउटसाइड द ब्रैकेट, इंटीरियर टर्म्स इनसाइड द ब्रैकेट दे चेंज देयर साइन. सो दैट इज x माइनस x, बिकॉज अंदर प्लस x है ना. अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगी माइनस x, माइनस ऑफ माइनस y इज प्लस y. x माइनस x इज कैंसल एंड योर आंसर इज प्लस. ठीक है, ये एरर हम कभी नहीं करेंगे. प्लीज मेक श्योर whenever you're subtracting binomial or trinomial, ensure to put a bracket. ठीक है. Third one, basic error which majority of you get confused with. अगर मेरे पास है 8x plus 4 upon 8, so what students do? 8 and 8 cancel, answer is x plus 4. It is incorrect. आप 8x को और 8 को कैंसिल नहीं कर सकते हो. When you can cancel only when you are having a common factor outside. अब देखो इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है. 4 is the common factor. अगर मैं 4 बाहर लेती हूँ, now in the bracket 4 into 2 is 8 along with x plus 4 into 1 is 4. हमने 4 कॉमन लिया दोनों टर्म्स में से. डिनोमिनेटर इज 8. अब ये जो बाहर वाला 4 है ना, इट इज गेटिंग मल्टीप्लाइड विद द ब्रैकेट. ये 4 अब फ्री है. दिस 4 and 8 कैन बी कैंसल लाइक दिस. ठीक है, सो हम डायरेक्टली 4 ऊपर 8 नीचे और 8 and 8 ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते. दिस इज अ पॉलिनोमियल. दीज टर्म्स आर कंबाइंड टुगेदर, इंडिविजुअल नहीं है. ठीक है. इन द सिमिलर मैनर हमारा जो यहाँ पर आंसर आया है 2x plus 1 upon 2, आप यहाँ 2 और 2 कैंसिल नहीं कर सकते हो because 2 is attached to x. It is not a common factor and there is no other bracket here. ठीक है, so please ensure हम इसे ऐसे ही subtract और ऐसे divide नहीं करेंगे. Let's move to the main topic now. We have to solve this question. ठीक है, अब आई एम प्रिटी श्योर मैंने आपको ये आइडिया बिगिनिंग में ही दे दिया था हाउ टू डू दिस वन. लेट अस फर्स्ट गेट रिड ऑफ दिस डिनोमिनेटर. नहीं तो मेरा क्वेश्चन ना गलत होने के पूरे चांसेस रहते हैं. डिनोमिनेटर को हम पहले हटाएंगे, देन इजीली वी कैन ट्रांसपोज एंड सॉल्व इट. नाउ 1 कैन बी रिटन एज 3 upon 3. 3 upon 3 1 होता है ना. आई नीड टू कंबाइन दीज टू. 1 का मतलब होता है 1 by 1. How can you add two fractions? Only when they are like fractions. LCM of 3 and 1 is 3. तो second fraction को मुझे 3 by 3 बनाना होगा. It can be written as 6x plus 1 upon 3 plus 3 upon 3, which is equal to x minus 3 upon 6. 3 और 6 cancel नहीं हो सकते. I told you why. ओके, नाउ 3 and 3 इज कॉमन लाइक फ्रैक्शन. आप न्यूमरेटर्स को ऐड कर सकते हो. 6x, ये वाली टर्म में x है, बाकी टर्म्स कांस्टेंट है, तो मैं 6x को कुछ नहीं कर सकती. इट विल रिमेन लाइक दिस प्लस 1 plus 3, दैट इज 4. डिनोमिनेटर इज 3. राइट हैंड साइड इज x minus 3 upon 6. अब आप क्या करोगी? आई टोल्ड यू, to get rid of the denominator, we will cross multiply. ये जो 6 यहाँ नीचे है, it will go up. 3 down, it will go up. और ये पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा. So that is 6 into 6x plus 4, which is equal to 3 into x minus 3, which is 6 into 6 is 36x plus 6 into 4 is 24 equal to
3 multiplied by x is 3x minus 3 into 3 is 9. I have just opened the bracket. Another step we already know, देखो बिल्कुल linear equation बन गया, कोई fraction नहीं है. Easily variable on one side, constant on another side. Take this 3x to left hand side. 36x minus 3x is equal to minus 9. ये plus the 24 है, it will go to another side as minus 24. 36 minus 3, is it 33x? Now, दोनों number negative है. If both the numbers are negative, what we are going to do? We have to add the numbers along with the negative sign. So that is minus 43. 33 and x are getting multiplied. तो अगर मैं 33 को हटाऊंगी, देखो ऊपर वाला number has to go down. So x is equal to minus 43 upon 33. These two are co-prime. इनके बीच में कोई common factor नहीं है. It cannot be simplified further. So you can leave your answer here. I hope the question is understood. Let's do another question. On the same line, ये question देखने में आपको technical लग रहा होगा, but it is quite easy. You just need to have patience, be accurate with your calculation and practice more and more questions. That is the only key. Okay, now 5x minus, अब 2 के साथ देखो, the पूरा bracket is multiplied with which number? 2. So I'm just opening the bracket, multiplying each term by 2. 2 into 2, that is 4x. Minus 2 into minus 7. देखो, minus inside, minus outside. It is cancel. So 2 into 7, it is 40 equal to, ये वाला bracket is multiplied with just 2. So 3 into 2, 6x minus 2 plus 7 upon 2. I have just opened the bracket. अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा simplify कर लेते हैं. 5x minus 4x, it is just 1x. So I'll just write it as x. यहाँ पर 6x है, अगर मैं left में ले जाऊंगी minus का 6x, which is equal to minus 2 plus 7 by 2. Now this is plus 40. If I take it to right hand side, it will be minus 40. ठीक है? Now this is 1 minus 6 integers. How much is that? 1 minus 6 is minus 5x, which is equal to, now minus 2 minus 40. अभी मैं fraction को नहीं ले रहे. Minus 2 minus 40 is minus 60. आपका question है 7 by 2 minus 60. 16 का मतलब 16 by 1. We know that two fractions can be subtracted only when they are like fraction. So denominator has to be same. LCM of 2 and 1 is 2. Multiply 2 up and 2 down. ठीक है? Left hand side is minus 5x, which is equal to 7. Denominator मेरा common is 2 now. Minus 16 into 2 is 32. Absolutely right. 16 into 2 is 32. Now quickly calculate what is 7 minus 32. Plus the 7 minus the 32. How much is that? Is it minus 25? दोनों का difference is 25. Bigger number minus, it is minus 25 by 2. यहाँ तक ठीक है? अब जो error होने के पूरे chances है. What students do? ये minus 5 है, इसे right में ले जाके plus 5 कर देते हैं. Please don't do that. ये minus 5 एक integer है which is multiplied with x. Multiplication का opposite क्या होता है? Division. तो ये ऊपर वाला number has to go down now. So you have to write it into 1 upon. ये ऊपर वाला number I am taking it down. Minus minus cancel. 5 into 1 is 5. 5 into 5 is 25. So what is the value of x here? That is 5 upon 2. Or you can convert it to mixed fraction. 2 whole 1 by 2. That's your answer. ठीक है? A small patience, grasp on LCM topic, grasp on integers is all you need to have. ठीक है? Now I need to give you an example or few of the examples. These are from, these are not from your new syllabus.
In the new NCERT book, these questions are rationalized. These are deleted. But these, I personally find them very, very interesting and important. So I have just incorporated so that you get an exposure. What others have already studied previous year. ठीक है? एक basic सा clue, एक basic trick. When the variables are given in the fractional form. देखो, x ऊपर, x नीचे. x ऊपर, x नीचे. जहां भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिखेगा वेरिएबल अप एंड डाउन, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड. यू हैव टू यूज द ट्रिक ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. आपको याद रखना है, whenever questions the variable is given in the form of a fraction, ऊपर नीचे, just use cross multiplication जैसे हमने अभी भी किया था. ठीक है, I'll do this fourth part for you. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये वाला नंबर देखो, बिलो नंबर विल गो अप एंड दिस पूरा वाला फ्रैक्शन, दिस वन डिनोमिनेटर विल गो टू राइट हैंड साइड. इसका मतलब 3y + 4, ये मेरा न्यूमरेटर है ना. 5 राइट हैंड साइड पे क्या था, डिनोमिनेटर, इट विल गो अप. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऐसे होता है, दिस विल गो हियर एंड दिस विल गो हियर. रिमेंबर दिस. 5 is going to left hand side. There is an equal to. Right hand side पे we are already having -2. Now ये पूरा का पूरा denominator as a bracket has gone to right hand side. 2 - 6. Why? I hope this much is understood. बिल्कुल basic. मैंने सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई किया है. 5 has gone here and this has gone here. Now simple multiplication and simplification. 5 into 3, that is 15y, plus 5 into 4 is 20, minus 2 into 2 is -4, minus is plus, 2 into 6 is 12 along with y. देखो एकदम easy होता जा रहा है step on step. Variables on one side, ये y variable है, ये भी variable है. Plus 12 on to left hand side. So 15y minus 12y, which is equal to -4, ये +20 है, on to another side is -20. ठीक है, quickly start solving it. 15 minus 12, it is positive 3y, which is -4 and -20 is how much? Two negative numbers together, add the number along with a minus sign. Up 3 and y are getting multiplied. If I transpose 3, it will go down like this. 24 divided by 3 is 8. Along with the minus sign, your answer is y equal to -8. Easy enough? ठीक है, एक easy वाला मैं आपको करके बताती हूँ. Rest of the things you can easily do yourself. First question I'm also doing for you. I hope now you will be able to analyze the question and do it yourself very, very easily. Question is 8x minus 3 upon 3x, which is equal to 2. 2 can be written as 2 by 1. ध्यान से देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं. This number will go here. This number will go here. So left hand side will be 1 multiplied by 8x minus 3, which is equal to 2 multiplied by 3x. अभी आसान लग रहा है ना? Right. Now 8x minus 3 is equal to 2 multiplied by 3, 6 along with x. या तो ठीक है. Now constants on one side, variable on one side. ये 6 को मैं लेफ्ट में ले आती हूँ, -6x हो जाएगा. 8x minus 6x is equal to -3 will go to another side as +3. 8 minus 6, is it 2x, which is equal to 3. So what is the value of x? It is 3 upon 2. That's your answer. ठीक है, ये extra questions थे which are deleted from your syllabus in current session, but very important, so I wanted you to do these. ठीक है, now let's come to our exercise, that is 2.2. First question now we'll be doing, we have to solve the linear equation. That means we have to find what is the value of x here. Now x upon 2 minus 1 by 5 is equal to x upon 3 plus 1 upon 4.
What did I say? The first step, variables on one side, constants on another side. ये x I will take here. X by 3 is positive. On another side, it will become negative. So that will be x upon 2 minus x upon 3 is equal to 1 by 4. Plus the 1 by 5 on another minus will become plus 1 by 5. Please learn to transpose the terms. अब हम क्या करेंगे? We can add and subtract the fractions only when they are like. Like बनाने के लिए you need to find the LCM. What is the LCM of 2 and 3? That is 6. Denominator मुझे दोनों का 6 चाहिए, तो I will just write here. 2 को 6 कैसे बनाएंगे? 3 up and 3 down. 3 को 6 कैसे बनाएंगे? 2 up and 2 down. In the similar manner, these two can be added by like fraction. LCM of 4 and 5 is 20. 24 को कैसे बनाएंगे? Into 5, into 5, and 5 can be made 20 into 4 up, into 4 down. Please do not forget, just numbers से denominator में multiply करोगे, numerator also has to be multiplied for making them equivalent fraction. Now, 3 multiplied by x, 3x minus 2 multiplied by x is 2x. दोनों का denominator क्या है मेरे पास? It is 6, which is equal to, यहाँ पे देखो 1 into 5 is 5 plus 1 into 4 is 4, and what is the denominator? Denominator is 20. ठीक है, आगे इसको simplify करते. 3x minus 2x is just x upon 6, which is equal to 5 plus 4 is 9 upon 20. यहाँ तक ठीक है. अब 6 is dividing x. What is the reciprocal or what is the transpose of division? It is multiplication. नीचे वाला number ऊपर. So that is 9 multiplied by 6 upon 20. मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके भी कैंसिल कर सकती हूँ, बट आंसर टू बी गिवन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, advisable, cancel the numbers here only before multiplication. 2 into 3 is 6. 2 into 10 is 20. Nothing else can be cancelled up and down. So 9 into 3 is 27 and denominator is 10. That is the value of x here. That is 27 by 10, or you can convert it to mixed fraction. I hope this much is understood. Second question is exactly similar. देखो वेरिएबल 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 एक ही साइड पे है. आपको क्या करना है? इन तीनों नंबर का LCM लो, make them like fraction, then denominator to be transposed to another side, and easily you can get your answer. ठीक है? Let us do this third part. Start doing the third part. Alright, I'll just do the third part. Till the time, I request you to please observe the question carefully and think how can we start doing the third. Question here is x plus 7 minus 8x upon 3, which is equal to 17 upon 6 minus 5x upon 2. अब हम क्या करेंगे? वेरिएबल ऑन वन साइड, कॉन्स्टेंट्स ऑन वन साइड. ये वेरिएबल है ना, टेक इट टू द लेफ्ट हैंड साइड. ये कांस्टेंट है, टेक इट टू द राइट हैंड साइड. सो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी हैव x minus 8x upon 3 plus 5x upon 2, which is equal to 17 by 6. ये वाला जो कांस्टेंट है plus 7, it will go to another side as minus 7. Count the number of terms. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. We have not missed any of the terms. ठीक है? Now, another step is making them like fraction. Like fraction कैसे बनाएंगे? Denominator has to be same. यहाँ denominator 1, 1. What is the LCM of 1, 3 and 2? It is 6. तो हम क्या करेंगे? Multiply first fraction with 6 up and 6 down. Denominator 6 बन गया. यहाँ पर 3 is already there. Multiply 2 up, 2 down. यहाँ पर 2 है. Multiply 3 up, 3 down. What is the LCM of 1 and 6? It is 6.
दिस फ्रैक्शन ऑलरेडी हैज 6, इसको 6 कैसे बनाएंगे, 6 अप एंड 6 डाउन। इस लेवल पे कोई गलती नहीं होनी चाहिए, एलसीएम एंड मेकिंग दैट लाइक फ्रैक्शन। नाउ अब इन तीनों का देखो, डिनोमिनेटर इज 6, आई जस्ट राइट इट लाइक दिस। फर्स्ट टर्म 6x minus 8 into 2 16x plus 5 into 3 15x, यहाँ तक ठीक। Now denominator is 6, 17 minus 7 into 6 is how much? It is 42. 7 6 are 42. That is my right hand side. आगे लेके चलते हैं, कंटिन्यू डूइंग दिस। ओके, अब आप देखो, -16 plus 15, how much? It is equal to -1. So we have got 6x minus 1x upon 6, which is equal to 17 minus 42. How much is that? Please calculate. Yes, 17 minus 42. आंसर हमारा नेगेटिव आएगा बिकॉज बिगर नंबर इज नेगेटिव। आसान तरीका बताओ, 42 और 17 को ट्रेडिशनली मल्टीप्लाई नहीं करना। 17 से पहले हम 20 आते हैं, कैसे आते हैं, 3 हमें यहाँ से मिल गया। अब 20 से 42 इज हाउ मच, दैट इज 22। सो 22 plus 3 is 25। ठीक है, सो आंसर इज -25 upon 6। नाउ 6x minus 1x, it is 5x upon 6, which is -25 by 6। अब ध्यान से, हम अभी तक बिल्कुल ठीक चल रहे। बिलो टर्म दिस डिनोमिनेटर विल गो अप। अगर मैं इसको यहां से रिमूव करती हूँ, इट विल गो अप। अपर नंबर न्यूमरेटर, इफ आई रिमूव इट, इट विल गो डाउन। सीधी सी चीज याद रखो, अपर नंबर डाउन, डाउन नंबर अप। 6 up, 6 down is cancelled. So x is equal to -25 by 5. But we know these can be cancelled. 5 into 5 is 25. So x the value is -5. That's your answer. ठीक है. Question number 4. Easily you can do by cross multiplication. इस 5 को यहाँ ले जाओ, multiply with the bracket. 3 को right ले जाओ, multiply with the bracket. दो साइड आएंगे. Take constants on one other side and variable on another side and solve it. इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। 5 is little technical. 5 आप आराम से कर लोगी अगर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 पहले समझा देती हूँ। So I want to do question number 6 with you. Then question number 5 need a lot of patience, accuracy and practice. वो आप आराम से करोगी if you are able to understand this question. Let's continue with question number 6. Alright, I'm continuing with question number 6 now. Please observe each and every step very, very carefully. It is again a very, very important question, but needs a lot of patience to do this one. Question number 6. My question is m minus. देखो यहाँ पर अब जो मैं आपको बोल रही थी ये बाइनोमियल है। आप मोनोमियल में से बाइनोमियल को माइनस कर रहे हो। इन द बिगिनिंग ऑफ टुडे सेशन डिड आई टेल यू हैव टू कंसीडर अ ब्रैकेट योरसेल्फ हियर। ठीक है, आप एक बाइनोमियल को, यहाँ पे 2 टर्म्स है, इसको माइनस कर रहे हो ना, अपने आप से कंसीडर करो देयर इज अ ब्रैकेट। देखो आई हैव पुट अ ब्रैकेट हियर अपॉन 3 विच इज इक्वल टू 1 माइनस, अब दोबारा m minus 2 इज अ बाइनोमियल, अपने आप से आई हैव टेकन अ ब्रैकेट अपॉन 3। अगर ये स्टेप आप याद रखते हो तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, नाउ आई वांट टू गेट रिड ऑफ दिस डिनोमिनेटर। मुझे डिनोमिनेटर ये फ्रैक्शन नहीं चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो व्हाट आई विल डू, दिस इज m by 1, इट इज 1 by 1, मेक देम लाइक फ्रैक्शन। LCM ऑफ 1 and 2 is 2, तो यहाँ पर 2 up 2 down। LCM of 1 and 3 is 3. So here 3 up and 3 down. Let's continue. 2 into m. It is 2m minus. There is a bracket m minus 1 and denominator is 2. Right hand side we are having 1 into 3 is 3 minus. क्या minus करना है? m minus 2 inside the bracket. Denominator is 3. ये आप याद रखोगे। अब आप देखो जब मैं ब्रैकेट ओपन करती हूँ, माइनस मल्टीप्लाइड बाय m,
it is minus n. Minus of -1, देखो two minuses together, they have to get cancelled to give you +1 upon 2. अगर आप ये ब्रैकेट कंसीडर नहीं करते ना, आप इसे -1 रहने देते हैं, क्वेश्चन वुड हैव गॉट रॉन्ग. नाउ 3 minus of m is -n, minus of -2 is +2, denominator is 3. यहाँ तक ठीक है? Let's carry on further. 2m minus m, it is just m plus 1 upon 2, which is equal to, अब आप देखो 3 plus 2, it is 5. 5 minus m upon 3. देखो ये क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा बन गया है. अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, नहीं तो फ्रैक्शंस को माइनस करना पड़ेगा. इट विल बिकम टेक्निकल, एडवाइजेबल. ऐसा कुछ फ्रैक्शन आता है ना, सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई. 3 will go here, 2 will go here and multiply. Now 3 into m plus 1, it is 3m plus 3. Plus 1 नहीं होगा. 3 into m is 3m. 3 into 1 is 3, which is equal to, अब 5 minus m has to be multiplied by 2. 2 multiplied by 5 is 10, minus 2 multiplied by m is 2m. अब देखो कितना आसान दिख रहा है, ये आपको ऑलरेडी आता है. Minus 2 will go to left hand side as plus 2. So 3m plus 2m is equal to 10 minus 3. 3 plus 2, it is 5m. 10 minus 3 is 7. So what is the value of m? It is 7 by 5. That's your answer. ठीक है. In the similar manner, you have to do question number 5. दोनों का LCM लोगे. Then ये एक बाइनोमियल है, पुट इट इनसाइड द ब्रैकेट एंड देन सॉल्व. ये आराम से हो जाएगा. ठीक है? नहीं होगा तो पुट इन द कमेंट ऑप्शंस. इन अनदर वीडियो आई विल डू दैट फॉर यू. 7, 8, 9, 10 आर नाउ वेरी वेरी इजी. अगर आप ये क्वेश्चंस कर चुके हो टेक्निकल, आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम इन 7, 8, 9, 10. आप देखो 7 में ब्रैकेट ओपन, वेरिएबल ऑन वन साइड, कांस्टेंट ऑन वन साइड, डन. 18, bracket open, 8 and 9 is exactly the same. What I'll do question number 10 for you. I think that is going to help you out. ये क्वेश्चन आपको करना है तभी आएगा, सिर्फ देखकर नहीं आएगा. Okay, so question number 10, why I'm doing it? Because it includes a decimal number, and I know many of the students remain confused with decimals. So that's the reason I'm doing this question number 10. 0.25 into 4f minus 3 equal to 0.05 into 10f minus 9. We have to open the bracket first. पहले आप डेसिमल को भूल जाओ. 25 into 4 क्या होता है? 25 into 4 is 100. We are having 2 digits to the right of decimal, so you have to go 2 position back. आपका ये क्या बनेगा? 1.00. और 1.00 क्या होता है? It is just 1 only. So it can be written as the product of these two. 1f minus 0.25 into 3. देखो 25 into 3 is 75. Decimal on the left of 2 places, go 2 places left, decimal here. Equal to 0.05 into 10f. अब जब हम 10, 100, 1000, जब हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, डेसिमल मूव्स राइट. अभी आपके पास बिना डेसिमल के नंबर है 005, विच इज एज गुड एज 5. 5 मल्टीप्लाइड बाय 10f कितना होता है? इट इज 50f. अब डेसिमल इज टू द लेफ्ट ऑफ 2 places, गो 2 places लेफ्ट लाइक दिस. इज इट 0.5? आप इसको 0.5 या 0.50f कुछ भी लिख सकते हो. माइनस now 0.05 multiplied by 9. 0.05 multiplied by 9. 9 into 5 is 45. Decimal to the left 2 places, go 2 places left, it is equal to 0.45. ठीक है? Now it is a variable. You have to take it left. Positive है तो negative. 1f minus 0.5f. 0.5 है, 0.50 एक ही बात है. राइट हैंड साइड माइनस 0.5, ये माइनस 0.75 को मैं राइट लेके जाऊंगी,
प्लस 0.75। ठीक है बेटा, यहाँ ध्यान दो, 1 का मतलब होता है 1.0 and another number is 0.5. Match the place value and then subtract. If I take a carry, this will become a 0, this is 10, and 10 minus 5 is 5. So what is the difference of these two numbers? It is 0.5f, which is equal to one number positive, one number negative. Difference लेना है. Difference is 0.30, plus or minus. बड़ा number plus है ना, it is a positive one only. So till now, the value of f is, right hand side आपके पास 0.30 है, ठीक है, and left hand side is 0.5 into f. So f is equal to 0.30 divided by 0.5. I hope by now you know very well how to remove the decimal. ऊपर वाला डेसिमल हटाया, देयर आर 2 digits, so 2 zeros have to go down. जितना डेसिमल के बाद डिजिट होता है ना, उतना जीरो गोज टू द डिनोमिनेटर. अगर मैं ऊपर वाले का डेसिमल हटाऊंगी, जीरो डाउन, नीचे वाले का डेसिमल हटाऊंगी, जीरो अप. ठीक है, 5 into 6 is 30, जीरो अप, जीरो डाउन, कैंसिल. आपके पास क्या बचा? 6/10. And 6/10 is what decimal number? That is 0.6. That's your answer. ठीक है? I hope till now you have understood the concept well. But please, I have left these questions for you to practice. Practice them up. Revise again and again. If you're still having doubt in the questions, please put that in the comment option. As per your rationalized syllabus, your chapter number 2 is done. But we are yet to touch any of the word problems which are actual application of linear equation. So I will be making one more video. You'll find it very interesting, wherein we'll apply those concepts. Very interesting. So please do watch another video. And if you have not liked and subscribed the channel yet, please do the needful. Thank you so very much. Take care.